हे गाइस, वेलकम टू माय चैनल। और आज हम क्रिएट करेंगे अरेबिक विंग्ड आईलाइनर लुक। सो लेट्स स्टार्ट। सबसे पहले मैंने यूज़ किया है लॉरियल का आई रिपेयर क्रीम। इससे रिंकल्स जो है वो कम हो जाते हैं और आईज जो है हाइड्रेटेड रहती है। इनका स्किन थोड़ा ड्राई है तो मैंने फरसाली का ऑयल अप्लाई किया है फॉर ग्लो। प्राइमिंग के लिए हमने यूज़ किया है AMM का मीडियम स्किन प्राइमर। हाइलाइटिंग एरिया पे हमने अप्लाई किया है NYX का बॉन्ड टू ग्लो इन शाइन। फाउंडेशन के लिए हमने लिया मेबेलिन फिट मी नेचुरल बफ फाउंडेशन एंड एप्लीकेशन के लिए हमने यूज़ किया है बफिंग ब्रश। अब हम ब्यूटी ब्लेंडर से टैप करेंगे टू सेट एवरीथिंग इन प्लेस। नाउ माई कैनवास इज रेडी फॉर माई नेक्स्ट स्टेप। और हाइलाइटिंग एंड कंटूरिंग के लिए हम यूज़ करेंगे ABH कॉस्मेटिक्स क्रीम कंटूरिंग पैलेट इन मीडियम। डार्क कलर को ब्लेंड करने के लिए मैं यूज़ करूँगा बफिंग ब्रश। बफिंग ब्रश से ब्लेंडिंग आसानी से हो जाता है कंपेयर टू ब्यूटी ब्लेंडर। हाइलाइटिंग एरिया को सेट करने के लिए हमने यूज़ किया है ब्यूटी ब्लेंडर। गाइस आई नो जो हाइलाइटिंग है वो अभी ज़्यादा हो रखी है, बट जब हम कॉम्पैक्ट पाउडर यूज़ करेंगे तो ये सेटल डाउन हो जाएगा। सो डोंट वरी अबाउट दैट। कॉम्पैक्ट के लिए मैंने यूज़ किया NC35 एंड NC41। शैडो के लिए मैंने यूज़ किया है 41 और हाइलाइटिंग एरिया पे मैंने यूज़ किया है NC35। बेकिंग के लिए हमने यूज़ किया है RCMA का नो कलर वाइट पाउडर। आईलिड पर हमने यूज़ किया मेबेलिन फिट मी फेयर कंसीलर और पैकिंग के लिए हमने यूज़ किया वाइट पाउडर। एक्सेस पाउडर को डस्ट कर देंगे विद फ्लफी ब्रश। ट्रांजिशन सेट के लिए हमने लिया है पीच ब्राउन कलर और डी सॉकेट पे हमने अप्लाई किया है ब्राउन कलर। इनर कॉर्नर में अप्लाई कर रहे हैं वाइट कलर फ्रॉम मॉर्फी 35। लोअर लैश लाइन पे भी सेम कलर ही यूज़ करना है। जब भी आप कॉम्प्लेक्शन के बाद आइस करें तो फिर थोड़ा केयरफुली करें, नहीं तो फिर आपका मेकअप ख़राब हो सकता है। आइस से जो भी फॉल आउट होता है वो आप डस्ट करते रहे, नहीं तो फिर वो अंडर आई एरिया पे स्टिक हो जाता है।
लाइनर के लिए मैंने यूज़ किया एंगलर जेल लाइनर इन ब्लैक। इनका आईब्रो जो है वो पहले से बूशी है, तो मैंने ज़्यादा कुछ नहीं किया है, बस वॉन्ड में कलर लिया है और अप्लाई किया है। लोअर लैश लाइन पे मैंने ग्लिटर अप्लाई किया है फॉर एडिंग सम ड्रामा। लैश के लिए मैंने यूज़ किया है एडल फॉक्स मिंक लैश। ब्लश टाइम, ब्लश के लिए मैंने यूज़ किया है टार्ट ब्लशर और ग्लो के लिए मैंने यूज़ किया है हुडा ब्यूटी हाइलाइटिंग पैलेट। लिप के लिए मैंने यूज़ किया है न्यूड कलर फ्रॉम शैम्बोर। Now fixing the makeup with my MAC makeup fixer and the look